is our 30th lecture. Very easy explanations, very easy. ज़्यादातर हम पाठ का already कर. So in this lecture we will discuss the different shape of national income identity. This is a national income identity. This is the total output produced by a country. Total output produced by Pakistan. This is the consumption for goods and services by Pakistani. I is the investment. Is the total investment. Total purchasing of new capital. Is the government expenditure. This is the net export. In the last lecture, already we have done as we have done that how to build this identity. Now, you please we redesign this identity. C, I, and G. We move these three variables, these three spendings, consumption spendings, the household spendings, the investment spendings, government expenditures. We move toward left side. When these three variables move left side, then it will be changed in the minus. Sign will be changed. Y minus C minus I minus G is equal to net export. So net export is equal to Y minus C minus I minus G. So here we take common minus I. Okay. Then we take brackets all domestic spendings. C plus I plus G. Okay. Actually, minus change all these three variables in minus I, minus C, minus I, minus C. These three variables are shifted to the left. Y minus C minus I minus G. Then we take common minus sign, then C plus I plus G, that is the domestic spending. Y is the total output level. So when our output is greater than total spendings, it means that some output is left for spending. This left output will be exported. Then net export will be positive. Net export is equal to export minus import. When remaining output will be exported, then export increases, imports are same. So export minus imports are positive. Net export is positive. Net export is positive. Output, okay? And we say this is a trade surplus. When exports are greater than imports, we say here trade is in surplus. The next option, when domestic savings is greater than output, it means that domestic output is not enough to satisfy domestic spending. We need to import. When we need imports will go up and net export will be negative, and we say that our trade in deficit. When both are equal, domestic output is equal to domestic spending, we say net export is 0. We say trade, this is trade balance. Our net export is in balance. Our trade is in balance. So three forms of trade surplus, trade deficit, and trade balance. You must keep in your mind. Okay, the same explanation which one we have done in the last slide. The same explanation over here, trade surplus and trade deficits. Which one already we have done? When domestic output
is greater than domestic spending, it means that exports are greater than imports. Exports are greater than imports. When exports are greater than imports, then net export is positive. We say trade is surplus. Trade is in surplus. Wait, please 1 minute, please. Let's start again. Okay, then trade deficit. The same thing is with trade deficit. But change is that already we have done when your domestic output is less than total spendings, it means that extra spending will be fulfilled by imports. Our imports will be greater than imports, and our trade will be in deficit. We see a trade in deficit. Already we have done. So this is the better simple explanations of historical data. Okay. Here we see that our net export is over here, and time period is on horizontal axis. Our trade net export is over here. Net export as a percentage of GDP is over here. Net export is a percentage as a percentage of GDP. We see that this is a historical data from record of net export from 1950 to 2006. आप देख रहे हैं बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम 1950 में नेट एक्सपोर्ट यूएस का 11, लेकिन बेटा उसके बाद ये गिरता जा रहा है नेट एक्सपोर्ट। इट मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम नेट एक्सपोर्ट जो है ना यूएस की क्या डेफिसिट में जा रही है, जहाँ पे उसका थोड़ा सा सर पेस बेटर होता है, लेकिन ओवरऑल डेफिसिट बेहतर हो ही नहीं रहा। जहाँ पे बैलेंस ट्रेड उसके बाद डेफिसिट में जा रही है, टिल नॉन डेफिसिट till 2006 trade in US is in deficit. Getting the point? Is the next point is we say that trade output is in deficit in US, but trade to GDP ratio, net export to GDP ratio with the blue color, that fluctuates over the time. Sometimes surplus, then surplus, sometimes surplus. Above zero is surplus, below zero it is in deficit. The simple explanation. Now we have to discuss the next thing is the international capital flows. International capital flows. That is little tricky concept. That is very important. बड़ा सिंपल बताना जरूर है कि हमारे पास ग्लोबल इंटरेस्ट रेट है, हमारे पास जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट लोकल इंटरेस्ट रेट से बढ़ जाता है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट लोकल इंटरेस्ट रेट से बढ़ जाता है, देन पाकिस्तानीज और ग्लोबल पर्सन की सभी की विश होगी कि वो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, उनको इंटरेस्ट पेमेंट साल के बाद ज्यादा मिलेगा, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देन पाकिस्तान के से क्या होगा, लोनेबल फंड्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान किसमें इन्वेस्ट करेंगे, बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, बाहर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जब कंट्री में सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर दूसरे कंट्री में सप्लाई बढ़ा दें, सप्लाई ऑफ लोन एंड अवेलेबल फंड्स बढ़ा दें, आप सप्लाई ऑफ लोन एंड फंड्स क्यों बढ़ा रहे हैं, उसकी रीजन क्या है, सप्लाई ऑफ लोन फंड्स क्यों बढ़ाने की रीजन क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। इट मीन आप क्या हो, नेट लेंडर हो, आप क्या हो,
नेट लेंडर हो कि आप लेंड कर रहे हो, उधार दे रहे हो, क्यों? इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो। हियर एस मीन सेविंग, ठीक है, दिस इज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, जो आप लोनेबल फंड्स बाहर या अपने बैंक में सप्लाई कर, ठीक है। अब जो कैपिटल बाहर जाएगा वो क्या है? आउटफ्लो हो रहा है, आपका कैपिटल बाहर जा रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करने के चक्कर बाहर जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल लोकल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, लोकल इंटरेस्ट रेट ग्लोबल इंटरेस्ट रेट से बढ़ जाता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? बाहर की कंट्री की सप्लाई ऑफ लोन फंड बढ़ जाती है, जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेटा पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब वो जो सप्लाई, उनकी सप्लाई है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रही है? उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जारी बेटा है। सेम टाइम when global interest rate is greater than the local interest rate, then you are supplier of loan funds. आप सप्लाई कर, ठीक होगी बात? You are the supplier of loan funds. और जो फॉरेन कंट्री वो क्या होगा? डिमांडर होगा, डिमांड ऑफ लोन फंड करना होगा। अगर लोकल इंटरेस्ट रेट ग्लोबल इंटरेस्ट रेट से बढ़ जाए, देन लोकल मार्केट में सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड बढ़ जाएंगे। क्यों? अब पाकिस्तान लोनेबल फंड की डिमांड करेगा। पहले फॉरेन कंट्री लोनेबल फंड की डिमांड कर रहा था, अब पाकिस्तान सप्लाई नहीं करेगा, पाकिस्तान क्या होगा? डिमांडर होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के इम्पैक्ट क्या होगा कि फॉरेन कंट्री में भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, तो क्या करेंगे? लोग सप्लाई ऑफ लोन फंड बढ़ा देंगे। उनकी सप्लाई होगी लेकिन पाकिस्तान की डिमांड होगी लोन फंड। तो व्हेन सप्लाई ऑफ लोन फंड्स which are from Pakistanis is equal to demand of loan funds, which is from foreign, which is by which is a supply of foreigners. Both are equal. Then we see this is the net outflow of loanable funds. Net outflow of loanable funds. In other words, this is the net purchases of foreign assets. जब फॉरेन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, देन आप क्या करोगे? फॉरेन एसेट ज्यादा बाय करोगे, हायर इंटरेस्ट रेट। माइनस जब लोकल इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, देन फॉरेन कंट्री में डोमेस्टिक एसेट ज्यादा बाय करेंगे। ओके ओके, व्हेन इंटरेस्ट रेट, जब सिचुएशन ये हो फॉरेन, देन डोमेस्टिक परचेजेस ऑफ फॉरेन एसेट्स इक्वल टू foreign purchases of domestic assets, then we say net capital outflow is in balance. When supply of loanable funds is greater than the demand of loanable funds, then the country is net lender. Country is a net lender. बात कर रहे हैं कंट्री नेट लेंडर कब होगा? जब इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। जब इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, आप सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड करेंगे, बाहर पैसा भेजेंगे ताकि साल के बाद ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करें। इन अदर वर्ड्स, आप फॉरेन एसेट ज्यादा बाय कर रहे हो, फॉरेन परचेजिंग कर रहे हो। जब फॉरेन परचेजिंग अब ज्यादा करोगे, ठीक है, फॉरेन एसेट ज्यादा बाय करोगे, देन फॉरेन एसेट फॉरेन domestic purchases of foreign assets greater than the foreign purchases of domestic assets, then we say that your country is net lender. अगर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, पाकिस्तान बाहर लोनेबल फंड्स की सप्लाई करेगा। इस केस में क्या होगा कि पाकिस्तान नेट लेंडर होगा। अगर लोकल मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, फॉरेन मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है, देन पाकिस्तान लोनेबल फंड की डिमांड ज्यादा करेगा। जब पाकिस्तान लोनेबल फंड की डिमांड ज्यादा करेगा, इट मीन पाकिस्तान बॉरर होगा। क्या होगा? बॉरर होगा। तो डिमांड ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने
करें बेटा, supply of loanable funds, I means the demand of loan. Getting the points? When global interest rate is greater than local interest rate, when supply of loanable funds greater than the limit demand of loanable funds, then Pakistan is net lender. When local interest rate is greater than local interest rate, then demand of loanable funds greater than supply of loanable funds, then Pakistan is net borrower. That is very tricky point. Must be very net borrowers. When both are equal, so when supply of loanable funds is greater than demand of loanable funds, it means net capital outflow. Then capital outflow is in पैसा बाहर जा रहा है ना, is in deficit. But then investment is greater than demand of loan funds is greater than supply of loan funds. Then पैसा पाकिस्तान में आ रहा है. Then capital outflow. Then net capital outflow is in surplus. Net inflow ज़्यादा हो रहा है, outflow then net capital outflow is in surplus. Okay. Now we are going to explain the same previous statement with the national income. Now the same net export is equal to y I minus t already done. If you remember all these now we separate out I y minus t minus g minus I. ओपन कर दिया हमने y minus t minus g minus I. जब आप टोटल आउटपुट से C और G निकाल दें, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी? इनकम से आप कंजम्पशन निकाल दोगे, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी? सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट्स. Saving minus investments. So net export is equal to saving minus. Net export means trade balance is equal to net capital outflow. Net export is equal to net capital outflow. Understand how we solve for net capital outflow? Y minus T minus G, that is saving, minus I, saving minus I, that is the net capital outflow. So trade net export is equal to net capital outflow. So finally, a country with trade deficit. When trade deficit, when net exports are negative. When trade is in deficit, then the country is net borrower. The country is net borrower, then demand of loanable funds is greater than the supply of loanable funds. जब ट्रेड डेफिसिट में होगा, ट्रेड डेफिसिट में कब होता है? जब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है. डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से कंट्री में डिमांड ऑफ लोनेबल फंड बढ़ जाती है. जब डिमांड ऑफ लोनेबल फंड बढ़ जाती है, देन यू आर नेट बोरर. डिमांड ऑफ लोनेबल फंड के बढ़ने का मतलब क्या है बेटा? आपकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इसलिए डिमांड ऑफ लोनेबल फंड ज्यादा है. जब फॉरेनर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान की करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी. करेंसी एप्रिशिएट होने की वजह से ट्रेड आपकी डेफिसिट चली जाएगी. That is the point. That is the point. So a country with trade deficits is a net borrower, and opposite case, a country with a trade surplus, when net export is positive, then country is a net lender. Net lender means saving supply of loanable funds is greater than the demand of loanable funds. The case will be a very simple case. Hopefully you understand the slide very clear. Okay.
So this is the world's largest detonations. This is just simple case study about US. US has large trade deficits. So when we find a large trade deficit in US in 1980s, then we see that US was large net borrowers in 1980s. जब डेफिसिट होगा डेफिनेटली यूएस क्या होगा लार्ज borrower होगा net borrower. If you might get the point. So now I'm going to close our lecture. This was the point which one we have to discuss. Inshallah, we will discuss the next points in the next class. If you have any question, you can ask now. Okay.